थिंग और वापस आके भी नॉट सेटिस्फाइड टू दैट एक्सटेंट, क्योंकि बाहर जाने का एक नुकसान सबसे बड़ा ये है कि यू नेवर नो आर यू गोइंग टू द राइट प्लेस। पारस हॉस्पिटल पहला हॉस्पिटल होगा। How do you feel when you walked into the hospital and your experiences at different places? So let me do the honors now. सर मुझे तो ये लगा कि यहाँ पर अगर कोई पेशेंट आएगा, पहले तो मुझे लगता है अगर वो कोई डिजीज़ लेकर आता है, मुझे लगता है यहाँ का एम्बियंस और यहाँ का एटमॉस्फेयर देखकर, यहाँ की वाइब देखकर आई थिंक उसकी आधी से ज़्यादा बीमारी ठीक होने वाली है। There are people I know who have sold their land and they have gone out and they have spent everything और वापस आके भी not satisfied to that extent, क्योंकि बाहर जाने का एक नुकसान सबसे बड़ा ये है कि you never know are you going to the right place। पारस हॉस्पिटल पहला हॉस्पिटल होगा स्टेट में जो यहाँ पे एज ए कटिंग एज टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी हर एक डिपार्टमेंट में इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो हमारे कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में भी स्टेट ऑफ आर्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और यहाँ पे वो बीमारियों का इलाज हो सकता है जिनके लिए यूजुअली यहाँ से लोगों को बाहर जाना पड़ता है। We are in ER. You can see this ER is being manned by 6 beds. Okay. We have one isolation room and minor OT to take care of things. They don't have to go to Delhi or Mumbai or anywhere else now that we have best patient care in Kashmir because of Paras. So I think they don't have to go and waste money over outside when they can get the quality at their home, at their own city, at their own homeland. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप जुड़ चुके हैं ANN न्यूज़ के साथ। अगर हम बात करें अल्लाह के बाद अगर आपका कोई लाइफ सेवियर है तो वो डॉक्टर होता है। वी से दैट डॉक्टर्स प्रोफेशन इज़ अ गॉड्स प्रोफेशन। और आज मैं पारस हॉस्पिटल में आई हूँ। अगर हम बात करें किसी ट्रॉमा केस की, या अगर हम बात करें किसी क्रिटिकल केस की, या अगर हम बात करें किसी इमरजेंसी केस की, अब जम्मू कश्मीर के लोगों को जम्मू कश्मीर के बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पर आपको सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी। वो ये है कि पारस हॉस्पिटल श्रीनगर आ पहुँचा है और यहाँ पर आपको सारी ही हेल्थ केयर फैसिलिटी 24/7 दस्तियाब होंगी। अब अगर मैं बात करूं पारस हॉस्पिटल की, तो ये श्रीनगर में एक वाहिद हॉस्पिटल नहीं है जो खुल चुका है। In fact, they do have a chain of hospitals, and the first hospital, it was founded in 2006, and the founder of this hospital was Dr. धर्मेंद्र नगर। आइए हम बात करते हैं डॉक्टर अल्ताफ साहब से, जो डायरेक्टर है न्यूरो साइंस के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। सर थैंक्स फॉर बीइंग ओवर हियर। सर आप थोड़ा ब्रीफ बताएंगे इस हॉस्पिटल के बारे में? ये एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। दिस विल बी कैटरिंग टू मोस्ट ऑफ द स्पेशलिटीज़ लाइक वी कार्डियोलॉजी, कार्डियक सर्जरी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, ऑन्कोलॉजी, then the kidney diseases, urology, nephrology, kidney transplants, जो dialysis वगैरह वो सब all the things will be done here. Then on top of that the other जो इनके supportive departments होते हैं like internal medicine is there, general surgery is there, gastroenterology surgery, you name it, you know, most of the departments, even rheumatology is here, dermatology will be here, और emergency medicine is there। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स अंडर द सेम रूफ एक प्राइवेट हॉस्पिटल में सारी स्पेशलिटी एक रूफ में एक कोलैबोरेटिव काम में ऐसा नहीं देखा जाता है। इट्स सीन ओनली इन द कॉर्पोरेट हॉस्पिटल। और वी वर अनफॉर्चुनेट कि कश्मीर में अभी तक कोई कॉर्पोरेट हॉस्पिटल बड़ा नहीं था एंड पीपल हैड टू गो आउट जिनको ऐसी सर्विसेज चाहिए थी प्राइवेट सेक्टर में। So and we had only good institute that is शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट जो कि सुपर स्पेशलिटी डील करती थी अंडर द सेम रूफ, बट बीइंग गवर्नमेंट हॉस्पिटल उसमें रश बहुत ज़्यादा होता है और पेशेंट जिनको एक प्राइवेट केयर भी चाहिए, सिंगल रूम भी चाहिए, वो उनको अवेलेबल वहाँ होते नहीं हैं।
तो ये सारी फैसिलिटीज़ और उनसे ज़्यादा और भी कुछ फैसिलिटीज़ यहाँ पे ऐड ऑन होके इस प्राइवेट सेक्टर में आई हैं, विच आर फॉर द गुड ऑफ द पेशेंट्स ऑफ कश्मीर। बात करें अगर व्हाट इज़ द यूएसपी ऑफ दिस हॉस्पिटल, अगर हम बात करें कि अगर कोई ट्रॉमा का केस आता है या कोई बहुत क्रिटिकल केस होता है जिसकी वजह से जो क्या होता है कि जो कश्मीरी पीपल है यहाँ के लोगों को बहुत सफ़र करना पड़ता है और वो आउट ऑफ JNK चले जाते हैं इलाज के लिए, और अगर उस इलाज की हम अगर उस खर्चे की बात करें वो खर्चा 2x इनफैक्ट 5x चला जाता है, जो उनके साथ उनके रिलेटिव्स होते हैं वो भी उस चीज़ में घसीटते चले आते हैं। तो सर आप अगर मैं बात करूं कि यहाँ के USP के बारे में, यहाँ की USP क्या है कि अगर कोई ट्रॉमा का केस आता है या अगर कोई क्रिटिकल केस होगा, सो हाउ डॉक्टर इज गोइंग टू हैंडल दैट एवरीथिंग, दैट केस, दैट ट्रॉमा केस, एंड इफ विल टॉक अबाउट द फैसिलिटीज, दैट 24/7 फैसिलिटीज, सो इज इट लाइक रियली ट्रू दैट डॉक्टर्स इज गोइंग टू बी ओवर हियर दैट 24/7? Yes, of course. Doctors will be here, the teams will be here, and not only junior doctors, the consultants will be on call round the clock. और जो भी कोई केस है, चाहे वो ट्रॉमा हो, बेसिकली जो इलेक्टिव केसेस होते हैं दैट्स इजी टू हैंडल क्योंकि वहाँ सारी टीम होती हैं। इवन इन एमरजेंसी केसेस द टीम विल बी हेयर, और जो कंसल्टेंट्स हैं और सीनियर कंसल्टेंट्स हैं दे विल बी ऑन कॉल राउंड द क्लॉक, सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद दैट। और जैसे आपने पहले भी फरमाया कि बाहर जाने से जो खर्चा होता है, एक देर आर पीपल आई नो हु हैव सोल्ड देयर लैंड एंड दे हैव गॉन आउट एंड दे हैव स्पेंड एवरीथिंग, और वापस आके भी नॉट सेटिस्फाइड टू दैट एक्सटेंट। क्योंकि बाहर जाने का एक नुकसान सबसे बड़ा ये है कि यू नेवर नो आर यू गोइंग टू द राइट प्लेस। आप चूज़ नहीं कर सकते हो वहाँ पे अपना डॉक्टर मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि वहाँ कई लोग टाउट्स भी होते हैं, देर आर सो मेनी तो दे lure you to some area which may not be a very the right place to go, एंड पेशेंट इग्नोरेंट होते हैं, यहाँ से जाते हैं वहाँ एक बहुत बड़े समुंदर में जाके गुम जाते हैं, एंड दे मे गो टू द रॉन्ग हैंड्स। Although there are definitely very good hospitals outside also, I'm not saying that this is the best, but then you have a facilities right in your own land or just a few minutes away, और जहाँ पे आपका खर्चा बहुत कम है। And the logo of Paras is compassion and accessibility, affordability, and of course quality. This is the logo of Paras. और यहाँ पे this is not sort of a private hospital जहाँ पे it's too commercial. It's not very commercial. आप खुद ही देखेंगे आगे आगे जैसे this is just started, तो it will be an affordable private hospital for the people of J&K. Okay, so how many trauma beds like Paras Hospital have inbuilt in this Srinagar one? See, I won't be able to give you the exact numbers because the medical superintendent, when you interact with them, वो बताएंगे आपको, लेकिन overall there are 200 beds in Paras Hospital, और इसमें ICU का ख़ास ख्याल रखा गया है, इंटेंसिव केयर का। Nearly what I've heard is around 70 beds are dedicated to the intensive care, which includes different departments like neuro intensive care, cardiac intensive care, and other critical care, etc., etc. So total dedicated beds, they are very important beds, which most of the hospitals, private hospitals in Kashmir do not have so many critical beds, which is very important. और trauma के लिए भी अच्छा, I mean chunk है, maybe I think maybe around 10-15 beds would be there. So what are the medical grade technology that Paras Hospital have inbuilt in this hospital other than the other hospitals, if we'll talk? I think there are hospitals which have scattered facilities. Here you will have under the same roof, you have like cardiac cath is there, your all neuro interventions, even जो एंडोवैस्कुलर इंटरवेंशन जिनको हम कहते हैं, एक तो ओपन सर्जरी होती है, जो एंडोवैस्कुलर सर्जरीज हैं, दे विल बी कंडक्टेड हेयर। देन यू हैव the dialysis, a good amount of dialysis machines will be available. So all these things under the same roof, and then we have CT investigations, all general investigations, plus you'll have a CT scanner, you'll have MRI, you will have all neurological facilities like EEG, EMG, nerve conduction studies, all will be done under the same roof. So one last question. If we'll talk about the affordability, कि अगर हम बात करेंगे जो middle class है, like will be afford, like वो afford कर पाएंगे ये सारी services and the facilities? Of course. I'll tell you, in most of the government hospitals also,
a patient has to spend a lot of money. अगर आपका कभी एक्सपीरियंस हो, कोई रिश्तेदार हो, कोई हो, और सपोज इंस्टीट्यूट में एडमिट है, SMH एडमिट, यू हैव टू ब्रिंग आउट सो मेनी थिंग्स, लाइक ऑल मेडिसिन्स आर नॉट फ्री, ऑल implants and stents and other gadgetries which are used, they are not free. The hospital services are free only. आपकी डॉक्टर की सर्विस फ्री है, नर्सेस की फ्री है, रूम्स फ्री हैं, थिएटर फ्री हैं, लेकिन बाकी चीज़ें आपको लानी पड़ती हैं. उसमें एड ऑन I think just about the same cost. Suppose some patient is spending around 50,000 on these things, another 50,000 or 60,000 more, and he will have a very good private facility available. So it will be that affordable. I mean, I feel common middle class, lower middle class also will be able to afford this. And plus, this is the right time when we have to encourage insurance, the health insurance. The people of Kashmir have to realize that health insurance is very important. उसमें तो सब कुछ ही affordable हो जाता है. Then they can go to any extent. ओके सो इसके लिए क्या एड ऑन होगा कि इफ़ लाइक अभी तो आजकल के टाइम पे लाइक इफ़ विल टॉक अबाउट दी टीनेजर्स, एवरीबडी इज़ हैविंग अ हेल्थ इश्यूज़, चाहे हम छोटे से लेकर बड़ों की बात करें, तो अगर हम फुल बॉडी प्रोफाइल टेस्ट की बात करें, सो वो सारी चीज़ें यहाँ पर दस्तियाब होंगी. एंड व्हाट विल बी द बेनिफिट्स एंड द एड ऑन दैट इज़ गोइंग टू बी लाइक दैट जो लोग हैं यहाँ के वो अवेल कर पाएँ. जी, सबसे बड़ी जो एड ऑन है, एक तो आपने कहा जो इन्वेस्टिगेशंस किसी को अगर जनरल चेकअप करना, दैट विल बी हियर अ पैकेज, वेरी नॉमिनल पैकेज विल बी हियर. दैट oh yes they are there. And on top of that, Paras is not a Paras hospital, it's Paras Health. Paras Health means looking after the health of the people of Kashmir, not only the sick people. जो अभी सिक नहीं है, प्रिवेंटिव मेडिसिन भी इधर यहाँ चलेगी, अवेयरनेस चलेंगी, प्रोग्राम्स जाएंगे, डिफरेंट विलेजेस में जाएंगे, पेरिफेरीज में जाएंगे, एंड देयर विल बी एबल टू कैच दोज पीपल हु आर नॉट इवन अवेयर ऑफ देयर डिजीजेस. तो वो स्क्रीनिंग भी होगी और बाकी अवेयरनेस भी होगी, विच इज़ नॉट डन बाय अदर कॉर्पोरेट्स. आई एम श्योर अबाउट इट. तो रीचिंग टू द पीपल एंड लुकिंग आफ्टर देयर हेल्थ बिफोर दे आर सिक and preventing their sickness is also a part of Paras. Okay, sir. So one last thing, on the behalf of this Paras hospital, you want to convey any kind of the message to the people of the Jammu and Kashmir who are watching us? I think they should never dream of going outside Kashmir for any treatment. If they feel that they want a private sector, and for that they want to go out, I think this is the right place, and they should at least have a visit. If they are satisfied, then utilize the services of Paras Hospital. Sir, if I'll talk about your department, what are going to be the facilities that you're going to provide to the people of Jammu and Kashmir in your department, if I'm going to talk about particularly? Yeah, neurosurgery, all high-end neurosurgical procedures will be available here. All difficult skull-based surgeries, then endovascular surgeries, vascular surgeries, hemorrhages, brain hemorrhages, then endoscopic procedures, microscopic procedures, spine as well as brain. All the things which one can dream of will be available here, and under image guidance, under neuro navigation, and neuro monitoring proper, all modern facilities which you can dream of will be available in this hospital. Neurosurgery, spine as well as the cranial, the skull part. Great. Okay, sir. Thank you for being connected with the ANN News. Thank you so much. तो ये हमारे साथ है डॉक्टर अल्ताफ़ साहब, डायरेक्टर ऑफ न्यूरो साइंस. तो इनसे हमने बात की यहाँ के इंफ्रा के बारे में, यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ दस्तियाब होंगी जम्मू कश्मीर के लोगों को, वो सारी बातें हमें यहाँ पता कर चली. और हम आगे भी देखेंगे कि व्हाट विल बी द पर्क्स, व्हाट विल बी द इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउ विल बी द एम्बियंस, और यहाँ के बाकी फैकल्टी मेम्बर्स से भी हम बात करेंगे. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड. Right now, here is with me Dr. Maqbool Suhail. He's a Director Associate of the Paras Hospital. Let's talk to him and let us know what made him to join the Paras Hospital. Assalamu alaikum, Dr. Saab. Assalamu alaikum. Dr. Maqbool, मैंने यहाँ पे एज एसोसिएट डायरेक्टर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी ज्वाइन किया है. पारस हॉस्पिटल पहला हॉस्पिटल होगा स्टेट में जो यहाँ पे एज ए कटिंग एज टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी हर एक डिपार्टमेंट में इंट्रोड्यूस कर रहा है. तो हमारे कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में भी स्टेट ऑफ आर्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, और यहाँ पे वो
बीमारियों का इलाज हो सकता है जिनके लिए यूजुअली यहाँ से लोगों को बाहर जाना पड़ता है। तो मेरा एक स्पेशली एक्सपर्टीज़ है जो भी कॉम्प्लेक्स लाइफ थ्रेटनिंग जो जानलेवा हार्ट की बीमारियां हैं जिनके लिए बहुत बार पेशेंट्स को यहाँ ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं होता, लेकिन पारस हॉस्पिटल के एफर्ट से अब यहाँ पर स्टेट ऑफ आर्ट पेशेंट केयर टेक्नोलॉजी और हाई लेवल एक्सपर्टीज़ पर्टिकुलरली इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी में अवेलेबल होंगी। डॉक्टर साहब, बात करें कि आपके एक्सपीरियंस की, इससे पहले आपने कहाँ पर काम किया और आपके कितने साल का एक्सपीरियंस है इस डिपार्टमेंट में? हाँ, मैंने इससे पहले जो इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट चेन ऑफ जो हार्ट के हॉस्पिटल्स हैं, कार्डियक नारायणा हेल्थ जिसे बोलते हैं, मैंने वहाँ पे एज ए सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट 8 साल का एक्सपीरियंस है एज एन इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। तो डॉक्टर साहब, लाइक व्हाट मेड यू टू जॉइन दी पारस हॉस्पिटल? पारस क्योंकि वर्ल्ड क्लास यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने डेवलप किया है, तो यहाँ पे हम जैसे डॉक्टर्स जो बाहर जिनको यहाँ पे प्लेटफॉर्म नहीं था काम करने का, तो ये अपने सर्विसेज अपने यहाँ लोगों को अवेलेबल करना, तो पारस की वजह से ये मुमकिन हो सकता है क्योंकि यहाँ पर हर एक डिपार्टमेंट में लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है और पेशेंट केयर के लिए जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है सब अवेलेबल है और एक्सपर्ट डॉक्टर्स अवेलेबल हैं हर फील्ड में इंक्लूडिंग इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी एंड कार्डियोलॉजी ओवरऑल। सो लास्ट क्वेश्चन, अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर हम आए दिन देखते हैं कि अगर बात करें छोटे से लेकर बड़े तक हर कोई एक डिज़ीज़ में मुलव्वस है, छोटे बच्चों को भी आज लाइक कार्डियक अरेस्ट, सडन कार्डियक अरेस्ट या कोरोनरी हार्ट डिजीज़, ये सारी चीज़ें उन्हें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। इनफैक्ट कई दफ़े तो ओबीज़ नहीं, अगर हम बात करें लीन पेशेंट्स को भी ये चीज़ें सफ़र करनी पड़ रही है। तो आप अकॉर्डिंग टू यू सर, आप क्या सजेस्ट करेंगे जम्मू कश्मीर के लोगों को कि कितने टाइम के बाद उन्हें फुल बॉडी प्रोफाइल चेक करना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए, अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाना चाहिए? सो व्हाट यू विल सजेस्ट? हाँ, जो कार्डियक हार्ट अटैक जैसे आप बोल रहे हैं कि इसमें एक काज नहीं होता है, मल्टी फैक्टोरियल, इसमें मल्टीपल कॉजेज़ होते हैं। यंग एज में आजकल हो रहा है क्योंकि लाइफस्टाइल सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया, स्मोकिंग है, ड्रग एडिक्शन है जो काफ़ी कॉमन है आजकल सोसाइटी में। सो मेरा मैसेज यही है कि टू प्रिवेंट सडन कार्डियक डेथ, जो भी हार्ट अटैक इस छोटी उम्र में होते हैं, तो मोस्टली इनमें जो स्मोकिंग है या ड्रग एडिक्शन है और हेल्दी लाइफस्टाइल, रेगुलर एक्सरसाइज और जो जंक फूड अवॉइड करें, पैक्ड फूड, बेटर रहता है कि अपना होममेड जो हम घर में खाते हैं नेचुरल फूड ज़्यादा प्रेफर करें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस अ प्रेशियस टाइम एंड थैंक यू। तो ये हमारे साथ थे डॉक्टर मकबूल सुहेल, जो कार्डियोलॉजिस्ट है, डायरेक्टर एसोसिएट ऑफ पारस हॉस्पिटल, जिन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया और हमें बताया कि हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए कार्डियक अरेस्ट से बचने के लिए। अभी मेरे साथ डॉक्टर असरार है जो कार्डियक सर्जन है, डायरेक्टर एसोसिएट ऑफ पारस हॉस्पिटल। आइए हम इनसे जानते हैं व्हाट मेड हिम टू जॉइन दी पारस हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। पहले तो आप अपने बारे में बताइए और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा पारस हॉस्पिटल के साथ? अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स अ लॉट। आई एम कार्डियक सर्जन profession. I have done my MCH cardiac surgery from SKIMS. Then I had my experience from Escorts Heart Institute, New Delhi, where I performed a number of surgeries. And after that, I joined Khyber Medical Institute, where I was for the last 5 years as Director Cardiac Surgery, and I have performed almost 500 surgeries. So this Paras is a new brand over here, but it's a well-established brand in India. So they approached me, and I thought it's good for us to have a better healthcare facility over here, which is very well needed for such high-end surgeries, especially cardiac surgeries. I'm looking forward to work with them so that we improve the healthcare system over this part of the valley, especially in cardiac sciences. Cardiac surgery, it's a high-end surgery which needs a lot of infrastructure, better facilities for the patients, for the doctors. I wish
and I'm hopeful that Paras Hospital will provide such facilities to us and to the patients. I'm looking forward to work with them for the next coming years. What are going to be the add-ons if I talk about your department particularly, and about the facilities that Jammu Kashmir the people of the Jammu Kashmir are going to be aware of? See, I have a lot of experience in cardiac surgery, be it adult cardiac surgery or congenital cardiac surgery. I'm very well experienced in minimal access cardiac surgery, which is in vogue throughout the rest of the world. I can perform cardiac surgeries through a small incision of 4 centimeters, be it a valve surgery or a coronary artery surgery or a pediatric surgery, so which is not performed in any part of this our state as of now. But I am very well experienced in that field. I can perform that here. I have such infrastructure over here, such facilities over here. डॉक्टर साहब दैट मीन्स आप ये बता रहे हैं कि जो जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं यहाँ पर वो सारी फैसिलिटीज उन्हें दस्तयाब होंगी जो बाकी हॉस्पिटल्स में नहीं है, जिसकी वजह से जो है आप कार्डियक सर्जरीज परफॉर्म कर सकते हैं. यहाँ पे आई एम होपफुल कि यहाँ पे सारी वो फैसिलिटीज होंगी जो जिसके लिए कुछ लोग बाहर जाते हैं, दिल्ली स्पेशली मैदानता, एम्स. मैं उम्मीद रखता हूँ कि यहाँ पे सारी फैसिलिटीज होंगे. वी आर वर्किंग ऑन that we should provide such facilities to our patients over here, so that उनको बाहर जाने की जरूरत ना पड़े to perform such high-end procedures जो complicated होते हैं, जिनके लिए हमें बहुत सी complex infrastructure चाहिए, machinery चाहिए. I'm hopeful that will be available in this Paras Institute over here. डॉक्टर साहब, कोई पर्टिकुलर मैसेज जो आप जम्मू कश्मीर के अवाम को देना चाहते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द पारस हॉस्पिटल? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि अब लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फॉर कार्डियक सर्जरीज, बी इट कंजेनिटल कार्डियक सर्जरी, यानी बच्चों की हार्ट सर्जरी हो, बड़ों की हार्ट सर्जरी हो, या कोई कॉस्मेटिक हार्ट सर्जरी कराना चाहे जैसे स्मॉल इंसिजन से कराना हो. कुछ लोग उस चीज़ के लिए बाहर जाते हैं. अब मुझे नहीं लगता उनको ज़रूरत होगी वहाँ जाने की, इंशाल्लाह. थैंक यू डॉक्टर साहब. ये हमारे साथ है डॉक्टर अस्रार, कार्डियक सर्जन, एसोसिएट डायरेक्टर ऑफ पारस हॉस्पिटल, जिन्होंने यहाँ के बारे में बताया, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताया, और क्या है ऐसा पारस हॉस्पिटल में जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर को अब यहाँ आना पड़ेगा और बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है. टिल देन स्टे ट्यून्ड. So right now here is with me Abid Saab, and he is the unit head of the Paras Hospital. So let's talk to him and let's know about the ambience and about the infra and what are the facilities, what are the perks that Jammu Kashmir people are going to avail. Hi. Hi. आदाब अफना. आदाब सर. सर मुझे पता लगा कि आप थोड़ी देर पहले आप लोग तशरीफ़ लाए हैं, तो आपको वो जो एक्सपीरियंस जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, मैं चाहूँगा कि आप खुद अपनी ज़बान में खुद बताएं. हाउ डू यू फील when you walked into the hospital and your experiences at different places? So let me do the honors now. सर मुझे तो ये लगा कि यहाँ पर अगर कोई पेशेंट आएगा, पहले तो मुझे लगता है अगर वो कोई डिजीज़ लेकर आता है, मुझे लगता है यहाँ का एम्बियंस और यहाँ का एटमॉस्फेयर देखकर, यहाँ की वाइब देखकर आई थिंक उसकी आधी से ज़्यादा बीमारी ठीक होने वाली है. बिकॉज द एम्बियंस एंड द इंफ्रा इज सो सुपर्ब एंड द ग्लोरियस. आई थिंक इट्स गोना बी द टॉप इन द Srinagar. So I think the best in that you have taken the best innovation, everything is best, I guess. Inshallah, Afna, what all you have said, we are going to prove this in Srinagar. Okay. Let me walk through with you about the hospital. Sure. This is a 200-bedded hospital. Okay. And we have around 70 critical care beds. So the entire idea of let me handle. So the entire idea of having this place is to make Kashmir, the people of Kashmir, whatever things they are deficient with. See, people of Kashmir and Srinagar have to fly to Delhi primarily. 80% of the patients fly to Delhi to get their treatment done. When I say this, it means a lot of disease burden is also there. तीमारदारी के लिए भी लोगों की ज़रूरत पड़ती थी और लगभग 5 गुना खर्चा उनका ज़्यादा हो जाता था. सो इस फैसिलिटी के यहाँ आने से, और माशाल्लाह कश्मीर में टैलेंट बहुत है, और एक चीज़ की जो कमी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी. सो हमने उस सारी चीज़ों को, हमारे जो मैनेजमेंट टीम है गुड़गांव में, ये हमारा 7वां हॉस्पिटल होगा. वी विल बी हैविंग, अगर आप इसको देखें,
health, hope and healing. We started in 2006 in Gurgaon, 2013 in Patna, Darbhanga, Panchkula, Udaipur and Ranchi we came in 2019. Srinagar and Kanpur in 2023. It is the 7th hospital, Correct. Okay. So, in another 8 years down the line, we'll be having more than 9,100 beds. Okay. So, the very idea of our chairman, Dr. Dharmendra Nagar, and team is to make healthcare available, accessible Okay. in those areas where things are deficient. If sorry to interrupt you, sir, if I'm gonna ask you a question, like why only Kashmir? Why Kashmir? Why Paras Hospital in Srinagar? See, this is just the beginning. We are going to come up in other smaller cities. Okay. We will be working more on hub and spoke model here in Srinagar. We'll be having smaller centers in Baramulla, Rajouri and all other sectors, Anantnag, where healthcare is deficient. So let me explain it to you about this hospital. We have 200 beds here with around 70 beds are of critical care. Okay. So if you see, you have already seen the hospital now. Yeah, so I you have have given seen- you have your expressions have given us the confidence that yes, we have actually matched up a little bit expectation, but yes, the journey has just begun. So it's all, we are here because of patients, and Srinagar will be going to witness a different dimension in terms of healthcare. सर इफ़ आई टॉक अबाउट दी अफोर्डेबिलिटी, अगर हम बात करें जो मिडिल क्लास लोग होते हैं या फिर टॉक अबाउट द लोअर मिडिल क्लास, उन्हें मतलब वो यहाँ पर अफोर्ड कर पाएंगे इफ़ आई टॉक ऑन दैट बिहाफ? अपना मैंने आपको बताया कि 5 गुना खर्चा जो है ज़्यादा होता है. 5 गुना तो मैंने बहुत आपको बेसिक वो बताया. एक स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा, 1000 से ज़्यादा लोग तो सिर्फ दिल्ली ही जाते हैं. लीव असाइड अदर सिटीज़ लाइक पंचकुला, लुधियाना, अमृतसर एंड ऑल अदर प्लेसेस एंड जम्मू ऑल्सो. सो देखा जाए तो वो सारा डिजीज़ बर्डन जो मैंने आपको बताया कि 5 गुना ज़्यादा हो जाता है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा. सो श्रीनगर के लोगों को और कश्मीर के लोगों को एक बहुत फ़ायदा होने वाला है इससे. डॉक्टर्स आर गोइंग टू बी अवेलेबल 24/7. We will be having 24/7 availability into 365 days. Sir, how many trauma beds do you have in this hospital? See, we are in ER. You can see this ER is being manned by 6 beds. Okay. We have one isolation room and minor OT to take care of things. Okay. We have a nursing station here. We have a doctor sitting here, which is being manned 24 hours with the doctor. Okay. So you can interact with her also if you want. Okay. What made, if I'll ask you a question, what made you to join the Paras Hospital? Well, I am very compassionate on the patient care, the quality, and there is a lot of difference between the patient care and the quality of the patient care we'll get in government hospitals and in Paras. So I think I'm very compassionate about that. So this is the main reason I joined Paras. Okay. Sorry, your good name? My name is Dr. Sheikh Hafsa. So you are over here? Yes, I'm in the ER right now, posted in the ER. Okay. Yeah. So how's the experience over here? Well, it's been a few weeks since I've joined Paras, and the treatment I get and the respect I get, and the other employees are very respectable towards each other, and it's good. That's Okay, Hafsa. So what's the message you're going to convey to the people of the Jammu and Kashmir on the behalf of this Paras Hospital? Well, I would like to say that they don't have to go to Delhi or Mumbai or anywhere else now. That we have best patient care in Kashmir because of Paras. So I think they don't have to go and waste money over outside when they can get the quality at their home, at their own city, at their own homeland. So Okay, thanks Hafsa for being connected. Thank you. So coming back to you, sir. So you. I will interrupt again. So you have witnessed, you are here for good around 1.5 to 2 hours. You have interacted with our doctors too. You have seen the hospital too. You talked about we had an excellent infrastructure, technology and all. So now you are getting more confidence into it. Exactly. So one last question on the behalf of the Paras Hospital, as the unit head of the Paras Hospital, what kind of the message you want to convey to the people of the Jammu and Kashmir? Well, as I said, we came to make things available and accessible. We are here to reduce the disease burden. Okay. Trust on us, believe on us. We are not only treating patients, but we are going to give employment to more than 1,500 people in our full capacity. This is just the beginning. Many more best things are yet to come. Thank you very much, Afsha.
All the very best to you and your team. Thank you. This was with me, Mr. Abid, and he is a unit head of the Paris Hospital. Thank you for staying connected with the ANN News. Bye-bye. Take care. How do you feel when you walked into the hospital and your experiences at different places? So let me do the honors now. सर मुझे तो ये लगा कि यहाँ पर अगर कोई पेशेंट आएगा, पहले तो मुझे लगता है अगर वो कोई डिजीज़ लेकर आता है, मुझे लगता है यहाँ का एम्बियंस और यहाँ का एटमॉस्फेयर देखकर, यहाँ की वाइब देखकर, आई थिंक उसकी आधी से ज़्यादा बीमारी ठीक होने वाली है. There are people I know who have sold their land and they have gone out and they have spent everything और वापस आके भी not satisfied to that extent. क्योंकि बाहर जाने का एक नुकसान सबसे बड़ा ये है कि you never know are you going to the right place. पारस हॉस्पिटल पहला हॉस्पिटल होगा स्टेट में जो यहाँ पे एज ए कटिंग एज टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी हर एक डिपार्टमेंट में इंट्रोड्यूस कर रहा है. तो हमारे कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में भी स्टेट ऑफ आर्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और यहाँ पे वो बीमारियों का इलाज हो सकता है जिनके लिए यूजुअली यहाँ से लोगों को बाहर जाना पड़ता है. We are in ER. You can see this ER is being manned by 6 beds. Okay. We have one isolation room and minor OT to take care of things. They don't have to go to Delhi or Mumbai or anywhere else now that we have best patient care in Kashmir because of Paras. So I think they don't have to go and waste money over outside when they can get the quality at their home, at their own city, at their own homeland.